But overnight, actually, a lot of hectic activity has been happening in the opposition camp. A letter has been sent out to all the Congress Karyakartas. They've been told, all of you gather in the Pradesh Congress Committee office. In fact, written instructions have also been sent that if needed, Karyakartas should be sent to wherever there is any possible ghapla happening. There is a monitoring center which is open 24 hours. In fact, Pappu Yadav yesterday spoke and he said that marta kya na karta, agar zabardasti loktantra ki maut hogi to Mahabharat ka sangram hoga. Pradeep, how is the administration reacting to reactions like this, to comments like this coming from some quarters? Before you go across to Pradeep, I want to go back to Niyamika, who has behind her some activity of posters about the constitution being put up. Jagdish Sharma, I'm told, has already arrived. He's the die-hard supporter of Robert Vadra and Priyanka Gandhi Vadra. Niyamika, can you show us what posters are being put up there in the Congress headquarters? Well, absolutely, as these are the posters which are being put up here as the party workers have already started arriving. And Jagdish Sharma is also here as he is also holding this poster which is stating that देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा या मोदी की ईवीएम आज फैसला हो जाएगा. So that's the kind of a question which he is raising right now as he is saying that some kind of discrepancies can also be reported. Let us go across to Jagdish Sharma. Sir, क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों इस तरीके का सवाल कर रहे हैं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है और पिछले 10 साल से हो क्या रहा है. आंकड़े आते हैं, सरकार बनती है, इस बात को तैयारी करें, विदेश जाने की भी राजपथ पे करें, सब कुछ करें. इस बार आप पहले से ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी तो नंबर्स आने शुरू. मैं तो पहली बार 10 साल से कर रहा हूं, मेरी पार्टी को पता लगा है और जब तक ईवीएम मशीन में कहता हूं विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते. क्या पता लगा है आपकी पार्टी को? मुझे नहीं, मेरी पार्टी तो जनता के बीच में, हमारे नेता जनता के विश्वास में 300 पार की बात कर रहे हैं. मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, ईवीएम से चुनाव है चुका, मैंने 6 दिन पहले बता दिया था. नंबर्स आपको लग रहा है कि हमें तो 30-40 देंगे और खुद लेंगे 300-350 लेंगे, हमें देंगे. आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि 30-40? जनता हमें दे रही है 300 पार, लेकिन ईवीएम मशीन हमें दे रही है 30-40. इसको देख लेना, 50 के ऊपर हम नहीं जाएंगे. So that was Jagdish Sharma as he is quite confident that the Congress party is only going to Niyamika is fantastic, and I can't just help smiling this morning. Die-hard Congress supporters saying 350 आएंगी हमारी. They've contested on 328 seats, but 350 आएंगी, 350 seats. इसको कहते हैं optimism. इसको कहते हैं. But he's right. I think a month ago when Padmaja asked कि भाई ये स्लोगन क्या चल रहा है, अब की बार 400 पार, so I had said कांग्रेस का भी स्लोगन है अब की बार 40 पार, and it's proven right. Well, yes, he's taken that to heart. We need to take a short break at this point in time. When we come back, we'll look at just why is the opposition so spooked and what are the arrangements that are being made in Uttar Pradesh, where tension is writ large on everybody's face in the opposition.